Take your notebook. If you are writing more done. हो गया भाई? नहीं हुआ था. Full topic we have not completed. Two laws, one equation, and this next part we have to complete. जरा मुझे इतना बता दो इन बात ये स्टार्ट किया था. तो मैंने कुछ लिख के दिया था, मैंने लिख दिया था. मॉलिक्यूलर आपने पूरा शेड्यूल करवा दिया. relation of temperature, pressure and volume relationship in gas. This हो गया मतलब points क्या हो गया है? नहीं. We have not started points. Pressure and volume 3. यहाँ से 2 है, यहाँ से 1. हो गया. फोन वगैरह कुछ यूज मत करो. अभी फोन मेरे बैग में. अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में मैं फोन लेके बैठ जाऊँ. Page number 120. 124. 33 पे कहाँ पे बेटा आ गई थी? 23. नहीं 124. Okay. Last time we have seen the relation between pressure and volume with gas. Okay. एक बार थोड़ा सा quick revise कर लेते हैं and then we will go for the actual होता है टॉपिक. हाँ. ज़्यादा भी बोलना नहीं, ध्यान दो. थोड़े ही टॉपिक्स बचे हैं बाकी. This one, then next one atmospheric pollution and one more practical chemistry. Practical chemistry you have in 10th standard also. तो जरा और वो आपने पहले भी रिक्वेस्ट थी ना आपका पूरा करने का, तो अभी वो लास्ट में पूरा करना है प्रैक्टिकल. और वो टॉपिक है आपको. Now the part which we are dealing it is all about the gas. Last time I have told you there are 3 parameters which are very important and the relation of these parameters on gas we have to see. Okay, which are those 3 parameters? कौन से है वो वेरिएबल 3 पैरामीटर जो गैस पे इफेक्ट करने वाले हैं? प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. ओके, दिस 3 पैरामीटर्स आर देयर. इसके अलावा मैंने आपको और एक चीज बोली थी. इफ आई एम चेंजिंग एनी वन ऑफ दिस पैरामीटर, ओके, इफ आई एम इंक्रीजिंग द प्रेशर और आई एम डिक्रीजिंग द प्रेशर, कुछ भी. Okay, so if I'm working on this particular parameter, increase, decrease, so what will be result on this 2 parameter? They will remain same or they will also change. तो ये भी चीज आपको याद रखनी है. If I am changing any one parameter out of this 3, remaining 2 will also change. Okay, so initially if it is P1, T1, V1. When you start that process, it is P1, T1, V1. P is for एक मिनट, मुझे पहले पूरा करने दे फिर तो बाद में स्टार्ट करना. हाँ, क्योंकि तेरा स्टॉप नहीं होने वाला, मुझे पता है. P1 प्रेशर, T टेम्परेचर, V1 वॉल्यूम. Okay, so if I am changing pressure from P1 to P2, then अभी हमने क्या बोला? I am changing one parameter, remaining 2 parameters will also change. So this will be also converted into new state T2. This will be converted into new state T. ये आपको याद रखना है. हाँ, एक चेंज हो गया तो बचे हुए भी चेंज होंगे. For your syllabus, all 3 parameters we are not going to study.
together. We will keep one constant and you will study the remaining two. For example, in one law, we have to keep temperature constant. In another law, you have to keep pressure constant. अब मैंने temperature constant रखा, so two parameters remaining with me are pressure and volume. बराबर है? If I am keeping pressure constant, the two parameters are temperature and volume. इस टाइप से आपको आगे के दो लॉस करने हैं. बोलो अभी. मैं बोल रहा था कि आपकी इनिशियल स्टेट उसका वैल्यू वन है. हाँ. Depend. मुझे चाहिए. If I want, as it is initial state, instead of taking P1, I can take P0 also. Very mercy. But P, it is indication, representation for pressure. और एक चीज P1 है, अगर इसको हम लोग P2 कर रहे तो T और B में सेम वैल्यू चेंज होना जरूरी हो क्या? सेम वैल्यू चेंज होना जरूरी है, मतलब वो पैरामीटर के वैल्यूज में चेंज हो. नहीं समझा? समझा देती वो भी. उसका क्वेश्चन ऐसा है, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ टेकिंग P1, we can take any other value also. So yes, we can take. It is our choice how you have to work on that particular. Another question is, if I am changing this P1 to P2, तो इस पे इफेक्ट सिमिलर होगा, मतलब उतने ही मैग्नीट्यूड का होगा? नो, इट डिपेंड्स. देयर में बी इंक्रीज और देयर में बी डिक्रीज. अब ये इंक्रीज और डिक्रीज कैसा है, ये हमको वन बाय वन देखना है. सो फर्स्ट लेट अस सी द कंडीशंस हाउ इट इज वर्किंग एंड देन वी विल गो फॉर द लॉ. ओके, तो आई थिंक लास्ट टाइम आई हैव शोन यू दैट पिस्टन, मूवेबल पिस्टन, ये वाला पार्ट वाला मैंने किया था ना. तो अगेन लेट अस टेक दिस सिलेंडर. This cylinder contain gas. This is the movable piston. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हाँ ध्यान से देखना. This complete it is volume of the cylinder. Complete is a volume of, उसमें गैस भरा हुआ, that complete it is a volume of the cylinder. With the help of this movable piston, you can increase the external pressure. Okay, push करोगे, external pressure will increase. Okay, but according to our kinetic theory, molecular theory, we have learned different concepts when molecules are moving here and there, they are colliding with each another. ये सब हमने पढ़ा है ना, तो with that respect we will study. Now this is our cylinder fitted with movable piston. Two types of pressure they are acting. Here inside it is internal pressure. From outside it will be external pressure. ये दो प्रेशर है. अब ध्यान से देखो, हाँ कुछ डाउट है तो अभी पूछना, बाद में फिर से आगे नहीं जाना, क्योंकि टुडे वी विल कंप्लीट लॉ, नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. नाउ दिस टू थिंग्स आर देयर. आई एम वर्किंग ऑन टू पैरामीटर्स, प्रेशर एंड वॉल्यूम. ओके, हियर टेम्परेचर इट इज कांस्टेंट. Temperature it is constant. Okay, now the first condition, if I am increasing the external pressure, I think this part also we have discussed last time. External pressure if it is greater than internal pressure. Okay, what I am saying, external pressure it is greater than internal pressure. अंदर जो भी collision हो रहा है, that molecule they are not exerting pressure on this inner part of the piston, but from external source, from atmosphere, the pressure is more. And as a result of this, what is going to happen? What is going to happen? ऊपर से प्रेशर बहुत ज्यादा है, क्या होने वाला है? Position of the piston, whether there will be any change or it will remain still as it is. Change होगा ना? What change will be there? It will go upward, it will go downward. Okay, so from this particular position where the volume is V1, volume is V, slowly this piston it will move down. चला गया नीचे, मैंने dotted line से indicate कर दिया है. So this is a new position. Now there is change in the volume. Change in the volume or not?
So with increase in the pressure, there is decrease in the volume. देखो यही आपने पूछा था ना मुझे, प्रेशर बढ़ने के बाद में वेदर it is also volume and temperature it will increase, so it depends. One parameter I have changed, other parameter it is automatically changed. So with increase in the pressure there is a decrease in the volume. हाँ, but अगर मगर क्या है बता? Complete it ना? So good. Question भी good है, अच्छी बात. Okay, so with increase in the external pressure and decrease in the internal pressure, piston it will go down. Okay, it will go down and volume it will change from V to V2. It will decrease. This is one condition. टेम्परेचर को मैंने टच किया है किधर? Why? Constant. आराम करने दो टेम्परेचर को फिलहाल हम लोग नहीं लेंगे. Okay, then second condition. What will be second condition? यहाँ पे देख के बताओ. What will be second condition? Internal pressure it will be greater than P internal. It will be greater than external. Okay, lid position. इसका मतलब क्या है? What is meaning of this? There is more collision. बराबर है ना? More collision. Molecules are creating more pressure. They are forcing it to move in the upward direction. So lid, here it is down. It will go up. चलो volume increase. तो अभी यहाँ पे जो था, it was here complete V. It will go here. Okay, so from V I will take here V2 मैंने already ले लिया है, so I will take here V3. There will be increase in the volume. Constant. Only two parameters we are using. We are working on only two parameters, keeping third one constant. And this is nothing but your boils. At constant temperature, volume of the given mass of the gas, it is inversely proportional to the pressure. देखो, boils को open करो. बेटा, same ऐसे ही है. At constant temperature, volume of the gas, it is inversely proportional, because when you are increasing the external volume or external pressure, volume get decreased. When you are increasing the internal pressure, volume get increased. So at constant temperature, volume it is inversely proportional to pressure. Now same thing we have to write in the equation form. What are the symbols for pressure, temperature and volume? आएंगे ना? आने दो ना, क्यों डर रहे हो? They are very simple, don't worry. दोनों लॉ का अच्छा रेक्टिफिकेशन कर लो, एकदम पक्का. Very easy. This understood. Now we have to write down mathematical equation. Just you have to put the values and solve the problem. कुछ और सारे problem is. आने दो. जो आता है आने दो. Don't worry. Prepare yourself. Now what we will do? We will write this equation statement in the mathematical form. So how we can write it? मुझे बता दो, notations बता दो ना, so that we can start with. मैंने आपको लॉ बताया है. Here it is. Same thing we have to put in words, symbol, representation. चलो बताता हूँ. लॉ क्या है? बॉयल्स लॉ. एक ही तो कर है. कौन सा वाला पूछिए जल्दी से. बॉयल्स लॉ. मिश्रा,
कैसे डालोगे? सी अगेन आई एम रिपीटिंग, एट कांस्टेंट टेम्परेचर volume of the given mass of the gas, it is inversely proportional to the pressure. Okay, because देखो when you are increasing the external pressure, हो जाए यहाँ पे, हो this side, हो जाए, हो जाए. If you are increasing the external pressure, volume decreases. If you are decreasing the external pressure, volume increases. So relation it is not direct. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं जाके एक मार्कर लेकर आ जाओ, वन मार्कर कॉस्ट 10 रुपीज. इफ आई आस्क यू टू ब्रिंग वन मार्कर, शॉपकीपर विल टेक 10 रुपीज. बट इफ यू आर टेकिंग दैट मार्कर इन बल्क, इट मे हैपन इट विल रिड्यूस सम ऑफ द अमाउंट. करते हैं ना बल्क में लेने के बाद में, लेकिन अभी हम लोग बल्क में ले रहे हैं, बट दैट शॉपकीपर इज नॉट रेडी टू reduce that amount. He is fixed with that amount. So it is directly proportional. You take 10 pen, 10 marker, it will cost 100 rupees. But in case if it is reducing the amount, bulk में लेने के बाद में if you are taking 50, he is ready to reduce 10 rupees. If you are taking 100, वो अगर 50 rupees और कम कर रहा है, तो see relation is inverse. You are taking more and more. चलेगा ना? कि कम करना है, या तो ऐसा उल्टा भी हम कर सकते हैं. आप 100 पेन ले लो, हाँ 10 रुपया बढ़ा देगा, ये भी कर सकता है. चलो देखो, हाँ ऑफकोर्स कम करना जरूरी रहता है, लेकिन टीचर्स का कम नहीं करने का वैसा कभी स्टेटमेंट को हमको वी हैव टू राइट इन द इक्वेशन. हाउ यू कैन राइट? व्हाट इज सिंबल फॉर प्रेशर? P. Then symbol for volume? P. Then this one temperature? T. Okay, so at first thing this law works at constant temperature because we are not using temperature anywhere. Constant temperature. चलो आगे आ जाओ. नेक्स्ट पार्ट, आगे क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? पानी का नाटक मत करो, एंड प्लीज डोंट कीप दिस हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग पीरियड. पीना, कीपिंग हाइड्रेटेड, इट इज गुड, बट ये अभी नाउ यू आर इन 9th स्टैंडर्ड, ये साल ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, 10th में जाओगे तो यही एक्टिविटी करते रहोगे अननेसेसरी, यू विल किल योर टाइम. चलो बता दो मुझे कैसे लिखोगे इसको? बी फास्ट ना, खाली नोटेशंस यू हैव टू पुट इन इक्वेशन फॉर्म. वॉल्यूम इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो कैसे लिखेंगे? V it is inversely proportional to 1 upon. अगर हम डायरेक्ट P लिख रहे तो it is directly proportional, but if you are writing 1 upon P, then it is inversely proportional. So this will be your mathematical equation. ये first form कर दिया as per the statement. Next step we have to remove this sign. We have to remove this sign. So how this sign can be removed? Equal to K. So therefore V is equal to K upon P. Constant है. कुछ भी क्वेश्चन पूछता है चाहे, अच्छा तो पहले वाला क्वेश्चन भूल गया. K का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो वो नहीं देने वाले, अगर फाइंड आउट नहीं करना है, ये वेरिएबल का करना है, then they will give the value. Then next step, rearrange this equation for constant or PV is equal to K. Meaning is one and the same, constant. Now, while doing this complete thing, we have seen two states, initial, final. Initial, final. याद आया आपको? हमने ऐसे करके किया था ना. So this equation for two steps we can have in this way also. P1 is equal to K for first state. Then similarly P2 V2 is equal to K for second state. बराबर है?
मैंने वहां पे बताया था ना, यहाँ से इतना चेंज हो रहा है, फिर उतना चेंज हो रहा है, सो देर इज चेंज ना, सो P1 इज इक्वल टू K, सेम थिंग बॉयल्स लॉ, अगेन P2 इज इक्वल टू K according to Boyle's law. Then we can take in the ratio form. Can we take this in the ratio form? Two equations together, can we take in ratio form? तो बोलो ना, नो, तो क्यों ताहिराज, क्यों सब नो 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 लगा के रखा है? क्वेश्चन भी भूल गया, कौन सा क्वेश्चन पूछना था तुझे? नहीं याद आ रहा है, चल मत याद करो. So here right hand side is equal, right hand side is equal, so we can write it as P1 V1 is equal to P2 V2 कर सकते हैं, और हम लोग इसको फ्रैक्शन फॉर्म में डाल सकते हैं. कैन वी पुट इन द फ्रैक्शन फॉर्म? P1 upon V1 is equal to P2 upon V2. Can we do that? No. Yes or no? No. क्यों? I know सब no no no. First write down the statement for Boyle's law. First write down the last example. Example. Write down heading Boyle's law. Today's date. फटाफट लिखो. First write down the law. आप खुद law लिखो. Don't copy. Huh? If you want, you can draw that cylinder with movable piston. First, write down the law means write that statement at constant for Boyle's law at constant temperature. ठीक से लिखो, गड़बड़ घोटाला कुछ करना नहीं. Write down the statement and then you draw that. Write down the final equation by your own without copying from your book or from board. Please don't copy. Yeah? Statement लिखो and then according to that you can derive that equation. Very simple and easy. Okay. पूरा last तक derive करो. P1 V1 is equal to P2 V2. In between whichever terms you are using, write down those terms perfect. What is P? What is P? What is K? Direct jump नहीं मारना है. Direct jump मत मारो. Cut करो उसको. Cut it. First remove that proportionality sign. P is equal to K upon P. समझ में आया ना? Follow all those steps properly. Jumping मत करो. आपको इस पे मार्क्स नहीं मिलेगा. हाँ बोल बेटा. Yes. Yes, that's actually what draw करना है क्या? Then for change in the state or for two gases, you will get P1 V1 is equal to K, and for second gas P2 V2 is equal to K. Then equalize or add both the equation, finally you will get. Now sentence का draw करना है. कौन सा क्या draw कर रहे हो आप? मैंने बोला question. मैंने बोला first write down statement. Then write down main equation, proportionality wala. Then reduce that equation, make it simple for P1 V1. समझा ना? Step by step करो directly, don't jump. I follow all steps properly. बेटा आपने लिखा? Doing which step?
Okay, write down where P, D, rental is what. जल्दी हाथ चलाओ, be fast. Done. Tahir, Anand, Path. Okay. Anika. आपका नाम देवस्मिता. देवस्मिता. Complete it. They all have completed till last part. हो गया? Anand don't apply shortcut. Shortcut करो, चलिए आपको shortcut का translate देगी. Done. How long it will take? Hardly 4 to 5 lines are there. But what is that statement for Boyle's law? Statement, huh? Picture is there on board. सुना ये बुक नहीं देखने, ऐसे ही पता था. At constant temperature, the volume of a given gas increases. ऐसे मैंने करा है. Increase. बात चाहिए तुझे? Increase. It is increased. Under which condition it is increased? The pressure decreases. Which pressure decrease? अच्छा. वो वहाँ पे figure है. Markers are there. Whatever you are doing now, complete it and explain it. तो जाके explain. Complete it. Take a copy of book and complete it. Quickly. Which increase, which decrease pressure, I want answer for that. Done. Anika. No. Okay. अगर वो कोई गलती कर रहा है ना तो आपको करेक्शन करना है जाके. Be fast. One. बदल क्यों? भाई का सारा पहले सब छोड़ के बैठ गए भी कुछ नहीं आता, सब कुछ आता है तुझे. हो गया? क्या है? ज्यादा मेहनत से निकाल रहा है. हो गया आपका? देवी सिट प्रॉपर हमारे बोलो. Anika, you complete it. हो गया बेटा? अच्छे से लिखा है. ये लाइक ये which sign is this? हाँ, so bad. हाँ, मेरे को कोई आता ही नहीं. हाँ, okay. Complete the remaining part. Good. हाँ. हो गया बेटा? All goes good. हाँ, explain it. Oh, what is one? Come on, get up. चलो. So. Another part was complete. The last part. Devika done. Devika, sorry. अरे वो बेटा चल जल्दी. ये वाला है ना, आपको explain करना है. With increase in the pressure, जल्दी जल्दी fast आपको दूसरा law भी पूरा करना है बेटा. बेटा सीधा बैठ, सीधा बैठ. तो देखो भेजना पड़ेगा मुझे वहाँ पे. अच्छा. वो. चलो चलो. If you want, you can make another copy. अगर आप पसंद नहीं है. जैसा आपको आता है वैसे बोलो. Nobody will laugh at you. All are very good. They are cooperative. Don't worry.
Just explaining. What happens when external pressure is increased? The volume decreases. Volume decreases. Your words are, remember this. With increase in the external pressure, on the other hand, internal pressure it is something less. External pressure is more. Okay, so first effect will be on the piston. Piston will move up or down with increase in the external pressure. Down. Down. And volume will Decrease. decrease. Okay, no problem with this. Second condition. When external pressure it is decrease, then The piston will move up and the volume will increase. upward direction. And what about volume? Increase. Increase. यही चीज आपको बता. अरे ये बता नहीं है तो मैंने बताया. अरे कंप्लीट है बता. अच्छा यस. बस. सेम ही बताना है. आप बताओ. हाँ बताओ. इस जब इंटरनल जब तब नहीं internal pressure will decrease and external pressure will increase. So the volume will decrease and the volume of the gas it will decrease and or will move downwards. Okay. And then the external pressure decreases and internal pressure increases. Interior pressure increases. The volume increases and the valve will move upwards. Upward direction. First, reach our main seat. Let's repeat those. जब तक तो बोलते रहे मुझे समझ में नहीं आएगी. बात सॉरी आनंद बोलो. Guide what is voice flow. Statement for voice flow. No. Anika, what is statement for voice flow? Statement. All three parameters we are considering. Then how many equally two? What about third parameter? Which is that parameter? Pressure. It is pressure. Pressure बोला ही नहीं था. क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? Temperature. Okay. Temperature. So third parameter temperature it is constant. So how you will start this law? Law मतलब statement. Yeah, another is not term. कैसे start करोगे बेटा? At constant temperature. Okay. What happens at constant temperature? Volume is direct or inverse? Inversely proportional to Pressure. pressure. कुछ फिगर देखने के बाद में प्रेशर दिख रहा है, वॉल्यूम दिख रहा है, टेम्परेचर is missing somewhere. And the missing parameter is a constant parameter temperature. याद रहेगा क्या है स्टेटमेंट? Start with constant term. At a different time. At constant temperature. If the pressure is increased, the volume. वो तो आपको नहीं बोलना, आपको सिर्फ रिलेशन बताना है. वॉल्यूम is inversely proportional to Pressure. temperature is constant. Try repeat कर क्या है तो करेक्ट करो. The constant temperature, the volume is inversely proportional to pressure. करेक्ट है? करेक्ट है? हाँ? नहीं, तो 1/P आएगा तभी वन अपॉन टी इनवर्सली चाहिए ना हमको. वॉल्यूम इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/. प्रेशर. ओके चलेगा. जाएंगे नेक्स्ट लॉ देखेंगे. अभी ध्यान से सुनना. हाँ बेटा आपने कर लिया पूरा. फिर P1 प्रॉब्लम आने वाले ना तो आपको लॉ तो ऐसे पूरे आना चाहिए.
If you are able to write down, reproduce that law, then you can write down the equation. Otherwise, it is not possible. समझे ना? नानी इतना दांत क्यों फाड़ता है? कौन? Ignore him. Ignore it. So let us see the next one. It is your one. Next one. The next one, it is also simple. It is charge law. Okay. Now for charge law again, we have to consider only two parameters. Only two parameters. And these two parameters are temperature and volume. Temperature and volume. So third parameter will be constant. And which is that third parameter? Pressure. अभी ध्यान से देखो हाँ, लॉ आपको खुद पता है, मैं नहीं बताने वाली. Again we will go with these things. Cylinder with fixed volume of gas. Okay, fixed volume of gas. Pressure is constant here. Pressure is constant. इतना हो गया. Every time we will take this only. Okay. Now, if we are increasing the temperature, for example, I have here one burner. Okay, burner का flame है, छोटा सा burner बना. मेरा drawing अच्छा है. कहाँ घुस रहा है? फिर क्या बनाते हैं? दिवाली का दिया बनाते हैं. हाँ चलेगा. ठीक है. अरे क्या भी लगेगा वैसा. बहुत मजा आता है. हम ना बनाओ. अच्छा मजा करेंगे. आजा. But you have to make one. पहले एक बनाना है. नहीं वो नहीं. आप do it. Yeah. So this cylinder, it contains gas, fixed volume of gas. So with the help of one burner, with the help of one diya, slowly we are increasing the temperature. Okay. एक खोए बना के जा रही हूँ. इतना मुझे अच्छा. बहुत ज्यादा चाहिए था ना, तो आपने एक ही बना दिया. Okay. So when we are increasing the temperature, एक मिनट, इसका एक ही बनाया है, उसको भी थोड़ा एंजॉय करना था. इसका फ्लेम हम थोड़ा लो रखते, एकदम हाई फ्लेम पे पहले हिट नहीं करते. slowly we will increase the temperature. So when we are increasing the temperature, okay, according to our molecular theory, there will be more collision. Rate of the reaction, collision, it will increase or decrease? Increase. So if rate of the reaction, rate of collision is increasing, what result will be there on the volume of this gas? Volume will increase. Pakka? Volume will increase and piston will move in the upward direction. But as the flame is very low, change is very small. But change is there. Small amount of increase in the volume, it will be visible. Okay. Now I am taking or increasing this flame from low to medium. थोड़ा बढ़ा दिया और okay, चलो low to medium. Any change in the position of piston? Yes, upwards. Again, Expansion. so expansion of gas take place, more and more molecule will be colliding together. Okay. Now finally it is high. नहीं देखो, मैं एक बात क्लियर करूं. I am here for this one, not for this one. आप लोग किस लिए आए हो? तो पढ़. Okay. She is disturbing you now. Better you change your place. Come and sit here. Solution we have. Okay, from low to medium, medium to high. Every time we have increase the temperature, and we know according to the kinetic theory, which increase in the temperature, there will be more collision and there will be expansion. Slowly and slowly that piston will move in the upward direction and volume will increase. Now you tell me, according to this,
with increase in the temperature, volume is increasing. Right now, it is increasing now. So relation is direct or inverse? Direct. अभी हमने सिर्फ increase किया. Now slowly again I am going in the backward direction. इसको मैं मीडियम पे लेकर आई. क्या हो जाएगा? What happened? Come down again from medium to low. Original position पे आ जाएगा. Okay, so from low to medium, medium to high. But in this complete process, one thing is clear: volume, it is directly proportional to temperature when pressure is constant. So if you are increasing the temperature, automatically volume increases. If you are decreasing the temperature, volume is decreases. This is nothing but your charge. मैंने लॉ बता दिया है, स्टेटमेंट बता दिया है. इन वर्ड्स आई विल गिव इन राइटिंग, रिमेनिंग पार्ट यू हैव. अभी जस्ट करना है लास्ट इक्वेशन तक. आई विल कॉल एनीवन टू राइट डाउन दिस इक्वेशन ऑन बोर्ड. राइट डाउन, फर्स्ट राइट डाउन हेडिंग चार्ज लॉ. CHARLE''S. At constant temperature, sorry, at constant pressure, volume of the gas is directly proportional to its temperature. अभी अगर आप बुक का हेल्प लेके देख रहे हो, then in volume it is little bit difficult to understand. So better you write down equation according to this statement and the final equation. जैसे आपने बॉयल्स के लिए लिखा था at difference. Okay, बुक में क्या दिया है I will explain later on, but you write on this one. Temperature को बात पहले according to this statement you derive that equation, final equation. चलो ताई स्टार्ट, आनंद स्टार्ट. जैसे हमने बॉयल्स में किया था. directly proportional to time. Same sign alpha, but it will be theta. Volume, it is directly proportional to temperature. Inversely के लिए हम लोग 1 upon लेते हैं. For directly we are directly taking that parameter without any fraction. Done? The washroom. Go. बेटा हो गया? क्यों? क्या किया है? Volume it is proportional to temperature. Okay. Now remove that sign in next step. V is equal fraction में रहेगा ना, फिर volume upon temperature equals to is equal to directly कैसे is equal to आ जाएगा? V it is equal to constant लेना पड़ेगा ना. In order to remove that sign you have to take constant. That constant every time it is K. But P is constant. It is constant of that equation. ये तो पूरे कंडीशन में ही हमने कांस्टेंट रखा है. हो गया? क्या किया है बेटा? क्या किया है? You are not math student. In ninth standard you have maths ना. क्या कर रहे हो? But we have options. You have options of math In a in class 9. Maths or economics. So, Maths में है ना. Maths में ही है ना. Don't change and even you ना.
You all Maths. don't quit maths. वो चाहिए ही. Because in future, if you are going for CA also or any other engineering branch, you need maths. और वो मार्कशीट देखते हैं. हाँ, maths is important. Group A वालों के लिए maths is important. With maths, you can take any of this faculty, any of this side. But नहीं, like jobs के लिए like sometimes they prefer. Sometimes. हाँ बिल्कुल महाराष्ट्र. हाँ चलो चलो बस हो गया बस. We are not discussing in general. जो भी कुछ है वो पहले यहाँ का इक्वेशन डिराइव करो. B is equal to K upon T. Why you want K upon T? आप लोग first you derive that equation. पूरा कर लो last तक till and you complete it बेटा. It is not our property. नाम मैंने नहीं किया पहले से था. हो गया equation first complete. Done. वो नहीं कॉपी करना है. वो कॉपी मत कर वो आपको समझ में भी नहीं आएगा. Okay, this is for one form ना. Rearrange कर दिया आपने K में for one state. बेटा T capital है. आगे remove that proportionality sign. Remove this sign. अभी next time है ना we make you one will sit on first bench and one will sit on last bench. चलेगा last. हाँ. ऐसे ही करना पड़ेगा. This is for one state. Another state. Right. जल्दी कर. पर क्यों किया? मैं अरे बेटा. See here. This is your main equation. We have removed this sign by putting T. So this is your main equation. So remove this sign. K. आप T upon में बोल रहे हो. डिनोमिनेटर में बोल रहे हो. मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा ना. क्या कर रहे हो यार? Very good. Okay. समझा. ऐसे कर. यहाँ पे क्या कंडीशन है ताहिर भाई? ओके नेक्स्ट स्टेप. दीपिका हो गया बेटा. क्या करती? आपको तो साइन निकालना ही नहीं है अल्फा का. बाय अल्फा. हाँ यू लाइक दैट साइन. तो रिप्लेस इट ना. क्यों कॉपी करना है बेटा? कर रहे थे ना बॉयज को तो अच्छे से कर लिया. तो चार्ट्स को भी कर लो ना. और चार चला ले. कुछ नहीं चार चल रहे. तुम्हारा दिमाग चार ही नहीं चल रहा है आज. Okay, as per the statement, you are also incorrect. V is proportional to T at constant P. Okay, this is our main statement. This is proportionality sign. When I am saying you to remove that sign, so while removing, place constant there. Okay, so it will be V is equal to K T. पहले वाले के अंदर it was upon ना, इसलिए हमने वहां पे मल्टीप्लाई करना है. जस्ट उसके प्लेस में you have to take constant. Now this we can rearrange. V upon T is equal to K. Okay. Similarly, if you have two different states, V1 T1 is equal to V2 T2. इतना ही हमको करना है. अभी as per your textbook, मैंने आपको देखने के लिए मना किया था. क्योंकि मना इसलिए किया था. Here we are saying there is increase in the volume with increase in the temperature. There is decrease in the volume with a decrease in the temperature. Okay, and if you remember, we have changed these flames also, low to medium, medium to high. The reason is very simple and easy. See,
As per our book, it is given with every degree rise in the temperature. 1 डिग्री से आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, हाँ, हमको पता है 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के बाद में क्या होने वाला है वॉल्यूम, क्या होने वाला है, हाँ, इंक्रीज होने वाला है। और ये इंक्रीज कितना होने वाला है, कितना इंक्रीज होने वाला है पता है, मैंने बोला था थोड़ा सा इंक्रीज होगा, पता है ना, थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा मतलब कितना, it is 1/273 of the original volume, हाँ, as per our, इसे मैंने तुमको पहले बोला था, तुमको मत देखो, बराबर है ना, it is given on page number 128 ऊपर लिखो। So if you are increasing temperature by 1 degree Celsius. So in 1 degree Celsius, there will be increase in the volume, and this increase in the volume is 1/273 of the initial volume. Initial volume अगर हमारा कितना है 5 ml, तो कितना होने वाला है, it will be 1/273 of that 5. Similarly, if you are decreasing the temperature, okay, with decrease in the temperature, as per law we know there will be decrease in the volume. But how much decrease in the volume? Again the same. It is 1/273 of the original volume. तो अगर ओरिजिनल वॉल्यूम आपका V है तो आपको इंक्रीज के लिए प्लस करना है एंड डिक्रीज के लिए माइनस करना है। इसलिए मैंने आपको मना किया था कि आप पहले स्टेटमेंट यू विल नॉट गो विद योर बुक, फर्स्ट यू डाइजेस्ट द स्टेटमेंट, राइट डाउन द लॉ एंड देन यू कैन कम ऑन पेज नंबर 128 so let it on. See here. Every degree Celsius rise or fall, both the things are given. In the temperature, a fixed mass of any gas expand or contracts respectively by 1/273 of its volume at 0 degrees Celsius. Provided the pressure is kept constant. समझ में आया? So first you will write down, if this question is asked, first you will write down the statement, then you will derive the equation, and third part you will write down this form. ये सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है, आपको एग्जाम में डिराइव करके नहीं बताना है। Okay, so with every degree rise or fall in the temperature, there will be change in the volume, and change in the volume is by, figure is given. What is that figure? It is in fraction. 1/273 of the original volume at 0 degrees Celsius. याद रहेगा? Sure? हाँ? वॉइस का क्या बोलता है? आज का टाइम हो गया, मुझे समझ में आया, आज का टाइम हो गया, ज्यादा तुमको बना नहीं सकते, then it all will be saturated. Okay, solution. Saturated solutions. No, it will be super saturated. You are already saturated. Okay, now बता दो. Voice down. फटाफट next question आगे पास करने हैं मुझे. Voice down. Don't see here anything. Okay. How do you keep on saying your question? एक क्वेश्चन नहीं मामा आया। तो पूछ रहा जो भी कुछ एरर आएगा वो पास ऑन हो जाएगा, बताओ। चलो उधर से देखना नहीं, क्लोज योर बुक, क्लोज योर बुक, क्लोज योर बुक। is inversely proportional to 1. ओके, इसमें क्या रह गया बाकी? अनामिका, अनिका, वॉल्यूम क्या बोला, रिपीट कर फिर से। Volume is inversely proportional to 1. Volume is inversely proportional to 1/p. Does it make any sense? करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? जल्दी
Any parameter is constant? कौन सा? Wait. Temperature. बस उतना ही मुझे याद रखिए. और स्टेटमेंट क्या है? तो वापस नहीं. Inversely proportional. 1/. 1/V क्यों आपको बोलना है? क्या है? Current pressure. V is inversely proportional to 1/. pressure. V when pressure. But But inversely itself it is 1/P. हाँ. Again you are saying 1/P. समझ में आ रहा है ना? Inversely का मतलब ही 1/P है. तो again why you are saying So 1/P? V inversely proportional to P. Done at constant temperature. इतना ही है. Equation. Final वाला. Final. K is equal to V into P. Yeah. Okay. K is equal to V into P. For two guesses. अच्छा तो हाँ. P1 और P1 equals to X and then P2 P1 is equal to K Okay, वो तो उसने बता दिया. और होगा क्या है two का? For two guesses. जल्दी rapid fire now. Fast. P1 P5 Okay. Next question. Charge law. हाँ. Oh, ये वो figure is here. Charge law. Easy है. जल्दी. Tahir, charge law. P1 is नहीं, I want statement first. uh, जो मैंने लिखा थे. at constant P, हाँ. volume is directly proportional to temperature. Okay. Equation. First equation. V upon P is equal to K. Okay. Again the same, different states. I think it is here. क्या वापस से बोलो क्वेश्चन Different states. अच्छा P1 upon इसको ही convert कर दो ना. P1 upon n equals to P2 upon Okay, done. Then another statement of charge law which is given in the volume and it is given in your textbook also. P equals to. हाँ. K नहीं, with every degree increase वाला I am asking. No. Final वाला equation I am not asking. With every degree increase or decrease. बोले तो 1/27. हाँ बोले तो लेकिन वो statement क्या है पूरा बोले तो. बोले तो क्या? तो bad वेदिका. हाँ क्या? Time over? हाँ. अभी हो गया उठ रहा. मेरे को statement चाहिए. अब मैं तो P1 P1 between temperature the increase in English 1 upon P3 of the Original at this is for increase and same you will do for degree. समझ में आया? So next period we will see combined law, few problems. Okay, this part is interesting ना क्या? Clean करना है board? अच्छा, okay. अभी तक बैठे. That's also zero. हाँ. ठीक है. मेरे को पता तो कितना पानी लग रहा था यहाँ पे ऐसा आके ये करने लग गया था भाई तो बाय भैया ये ऐसा जो भी आएंगे ना मैडम तो पाते हैं क्या? हाँ इधर ये क्या स्टॉप